25टा प्रश्न आम विगत क्लास रे आलोचना करथिले तो आज जो बाकी रहिला आउरी पखापाखि 25टा प्रश्न ए क्लास रे आम आलोचना करिबा। तो let's start the question answer section. Let's not wait for anyone. So what happens? Question number 26 24 नंबर प्रश्न 24 नंबर प्रश्न कौन बिले 24 नंबर प्रश्न होची what happens when the poet lies on his couch. तो कवि जेते बळे सोई पडिचंती तांको रूम रे एकला what happens when the poet lie on his couch. ऑप्शन गुडी कहूची ऑप्शन ए he writes poem on the daffodils उपरे से पोएम लेखुचंती. ऑप्शन बी the memory of the daffodils flashes upon his inward eye. तांकर अंतर्निहित अंतरात्मा भितरे कौन हुए डेफोडिल देखा देइची. ऑप्शन सी होची सी द डेफोडिल्स ग्रोइंग इन नंबर इन हिज इनवर्ड आई. एंड ऑप्शन डी ही गेट्स लॉस्ट इन हिज थॉट्स. से भावना भितरे बुड़ी जाइचंते. अलेख कहला ऑप्शन बी राज जगन्नाथ द मेमोरी ऑफ द इनवर्ड आई. पूर्णिमा विश्वजीत स्वागतिका द मेमोरी ऑफ ओके मौसमी जगन्नाथ. ठीक उत्तर होची पिले यस द मेमोरी ऑफ द डेफोडिल्स फ्लैशेज अपॉन हिज इनवर्ड आई. तांकर अंतरात्मा भितरे से देखिचंती डेफोडिल्स र स्मृति को. क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर प्रश्न कौन बोले व्हाट आर द टू मूड्स ऑफ द पोएट व्हेन ही रिमेंबर्स द डेफोडिल्स. व्हाट आर द टू मूड्स ऑफ द पोएट. कविंकर दुईटा मूड कौन जेतेबेले सी देखिचंती कौन व्हेन ही रिमेंबर्स जेतेबेले मने पकई थामते. ऑप्शन ए वैकेंट एंड पेंसिव. ऑप्शन बी happy and plaintive. Option C solitude and company. Option D all of the above. पूर्णिमा कहला vacant and pensive. अलेख मौसमी मैनी pensive and vacant. विश्वजीत स्वागतिका रूपाली तेजस्विनी प्रज्ञा प्रियदर्शिनी अश्विन प्रकाश आलोक मिश्रा राधे जगन्नाथ पंडा वर्षाराणी साहू. वेरी गुड. ताले ठीक उत्तर होचे पिले टू मूड्स ऑफ द पोएट आर vacant and pensive mode. vacant कहले thoughtful yes or no and pensive vacant and pensive. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर प्रश्न 28 नंबर प्रश्न कौन व्हाट डज द मेमोरी ऑफ द डेफोडिल्स डू टू द पोएट. व्हाट डज द मेमोरी ऑफ द डेफोडिल्स डू टू द पोएट. डेफोडिल्स र मेमोरी कवि को कौन करी. ऑप्शन ए टेक्स हिम इनटू जोकेन कंपनी. तांको जोकेन कंपनी भीतर को नहीं जाई. ऑप्शन बी फिल्स हिज हार्ट विथ प्लेजर. तांको हृदय आनंद रे भर्ती हो जाइछि आनंदपूर्ण हो जाइछि. ऑप्शन सी ड्रैग्स हिम आउट ऑफ हिज सॉलिट्यूड. तांकर एकाकित्व भितरु तांको टाणी नेइछि. ऑप्शन डी हेल्प्स हिम ओवरकम हिज सरो. तांकर जो जंत्रणा अछि से जंत्रणा रो बाहर को से चली जाइछन्ते. फुल हार्ट विथ प्लेजर वर्षराणी रूपाली कहला बी तेजस्विनी कहला ऑप्शन ए. ऑप्शन एटा होछि टेक्स हिम टू जोकन कंपनी भूल हबो सेटा ओके. ऑप्शन एटा पिले भूल हबो. ठीक उत्तर होची एक्चुअली fills his heart with pleasure. My heart with pleasure fills and dances with the daffodils. मने पकेबा से स्टैंडर्ड हास स्टैंडर्ड लिखाइछि my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. That's why ऑप्शन बी टा होची ठीक उत्तर. बी इज द राइट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर प्रश्न 29 नंबर प्रश्न होची who dances with the daffodils. daffodils सहित किए नाचिछि. Who dances with the daffodils? Option A the poet कवि नाचिचंती. ऑप्शन बी द स्टार्स तारा मान नाचंती. ऑप्शन सी द क्लाउड्स मेघ मान नाचिचंती. ऑप्शन डी द पोएट्स हार्ट ओके. अलेख कमलाकांत विश्वजीत वेव्स मु सेइथि पई कहूची आफ्टर लिसनिंग ऑल द ऑप्शन वी मस्ट आंसर द क्वेश्चन. सब ऑप्शन सुनिला परे उत्तर दबा पिले मु कोन कहूची तमे कोन दोछ. वेव्स ता खराब न हो बट वेव्स ता जो टाइम रे दरकार सेही टाइम रे कहबा हमें. सो हियर व्हाट हैपेंस द पोएट्स हार्ट ऑप्शन डी टा होची ठीक उत्तर. क्वेश्चन नंबर 30 30 नंबर प्रश्न कोन व्हाट इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड बोली कागु कहआ जाईची. व्हाट इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. ऑप्शन ए होची being in the company of the daffodils. ऑप्शन ए being in the company of the daffodils बनकर साथी. ऑप्शन बी the joyous memory of the daffodils. ऑप्शन सी being lonely एकाकित्व. ऑप्शन डी being in a pensive mood.
So which is the right answer? Option B. मानी कहला option B. Option B होची the joyous memory of the daffodils. मानी बेटा एकदम ठीक उत्तर बी टा वर्षा जगन्नाथ आलोक दीप्तिमान कमलाकांत शी हबो नहीं बी 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 द राइट आंसर यस ज्योति ज्योत्स्ना रानी वेरी गुड बेटा द ठीक उत्तर होची यस द जॉयस मेमोरी ऑफ द daffodils is the right answer option B. Question number 31 31 नंबर प्रश्न. The word bliss means bliss शब्दर अर्थ कौन the word bliss अर्थ कौन पिले ऑप्शन ए ग्रेट लॉनलीनेस एकाकित्व ऑप्शन बी ग्रेट जॉय अपूर्व आनंद ऑप्शन सी ग्रेट लव अपूर्व भल पाइबा ऑप्शन डी ग्रेट ब्लेसिंग अनन्य आशीर्वाद वर्षा कहला जॉय कमलाकांत कहला जॉय जोशा ऑप्शन बी जॉय ओके मौसमी हरे कृष्ण सुप्रिया इंदिरा शिवा प्रज्ञान आलोक पूर्णिमा कमलाकांत विनोद ठीक उत्तर होची यस गाइस ग्रेट जॉय ब्लेस मीन्स हियर ग्रेट जॉय सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर प्रश्न व्हाट डज द वर्ड ग्ली मीन ग्ली जी एल ई ग्ली कहले कोन व्हाट डज द वर्ड ग्ली मीन ऑप्शन ए सैडनेस ऑप्शन बी ग्लूम ऑप्शन सी हैप्पीनेस ऑप्शन डी जॉय ग्ली कहले कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्ली जी एल ई जॉय रूपाली कहला जॉय ओके असीन जय वर्षा रानी जॉय शिवा ऑप्शन सी ओके सो जॉय जॉयटा हूँ ठीक उत्तर जीवा परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन मेरी मेरी शब्दर अर्थ मु वर्तमान चारटा शब्द कहबी से भीतर गोटे अर्थ कहब तुम तो मेरी शब्दर अर्थ कौन पिले ऑप्शन ए गे जी वाई ऑप्शन बी जोकन ऑप्शन सी ब्लीज ऑप्शन डी ग्ली जोकन वर्षा कहला जोकन 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 हरिकृष्ण कहला जोकन वेरी गुड देन कमलाकांत कहला जोकन जोकन रूपाली जोकन ओके अलेख बी मीन्स जोकन तो जोकनटा हूँ ठीक उत्तर पिले एठी मेरी कहले एक्जाक्टली जोकन परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर प्रश्न तो मन भाई ए स्टेट ऑफ लोनलीनेस इज कॉल्ड डैश ए स्टेट ऑफ लोनलीनेस इज कॉल्ड डैश स्टेट ऑफ लोनलीनेस एकाकित्व अवस्था को कौन कहा जाए ऑप्शन ए पेंसिव ऑप्शन बी वैकेंट ऑप्शन सी सलीच्यूड ऑप्शन डी प्लेजर स्वागतिका ऑलरेडी आंसर दे देलानी कहला सलीच्यूड अच्छा दिव्य ज्योति कहला सलीच्यूड कमलाकांत कहला सलीच्यूड जय महाकाल विनोद मनी शोनी शिवा शुभ्रा तेजस्विनी जगन्नाथ आलोक सुप्रिया मौसमी ठीक उत्तर हो पिले यस सलीच्यूड स्टेट ऑफ लोनलीनेस स्टैंड फॉर सलीच्यूड क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर प्रश्न 35 नंबर प्रश्न कौन 10,000 saw at a glance 10,000 saw at a glance touching their heads in sprightly dance touching their heads in sprightly dance yes sprightly dance एठी जो sprightly dance शब्दटा व्यवहार होईची यार अर्थ कौन sprightly dance रो अर्थ कौन ऑप्शन ए रिलीजियस डांस धार्मिक डांस ऑप्शन बी डांस ऑफ एंजल्स देवदूत मानकर नाच ऑप्शन सी ए हेवनली डांस स्वर्गीय नाच ऑप्शन डी लाइवली डांस ठीक उत्तर हो पिले यस इट इज ए लाइवली डांस समस्त ठीक कहीच लाइवली डांस जो माने स्प्राइटली डांस कहले लाइवली डांस परवर्ती प्रश्न हम आलोचना करिवा परवर्ती प्रश्न होची व्हाट आर द पोएट मीन बाय होस्ट व्हेन ही सेज ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स जतबेले कवि होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स कहिचंती एठी होस्ट कहबार माने कौन ऑप्शन ए वन हु एंटरटेन्स ऑप्शन बी ए गेस्ट ऑप्शन सी ए लार्ज नंबर ऑप्शन डी ए मैरी कंपनी वर्षा कहला लार्ज नंबर वर्षा ओके लार्ज नंबर सोनी पूर्णिमा अलेख ज्योत्स्ना हरे कृष्ण दिव्य ज्योति सागरिका साहू ओके ऑप्शन सी होची लार्ज नंबर क्लियर ठीक उत्तर होची एटी होस्ट कहबार अर्थ होची it indicates number large number okay so question 36 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची सी लार्ज नंबर क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर प्रश्न who was or were wandering lonely who was wandering only किए lonely एकाकी वंडर करूथुला माने एणतण लक्षण भाव रे बोलुथुला ऑप्शन ए क्लाउड ऑप्शन बी द पोएट ऑप्शन सी द डैफोडिल्स ऑप्शन सी द स्टार्स so who was wandering lonely पोइट मौसमी असिन सूर्या जय महाकाल तेजस्विनी पूर्णिमा ओके सो यस I was wandering lonely like a cloud else
high over valleys and hills, when at once I saw a host of golden daffodils. So it is told for the poet, कविंग ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି. So the poet was wandering lonely. ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି the poet. ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ question number 38 38 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ. Whom does the poet compare himself with? कवि ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? Whom does the poet compare with? कवि ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ରେ ପିଲେ? Option A the daffodils, option B the lake, option C the stars, option D the cloud. मानी कहला the cloud. अलेख सोनी ओके पूजा मौसमी ठीक उत्तर होची yes the poet has compared himself with the cloud. I was wandering like a cloud that floats high over vales and hills. Yes or no? Okay, so cloud is the right answer. Cloud होची right answer, option D. Question number 39 39 number प्रश्न 39 number प्रश्नटा होची the poet has made two comparisons in the poem Daffodils. What are they? The poet has made two comparison. दुईटा तुलना करिसंती कवि. What are they? से दुईटा comparison कौन कौन? What are those two comparison he has made? Okay, सुनिबा ऑप्शन गुडी को. Option A himself with the stars, daffodil with the stars. निजको तारा सहित daffodil को तारा सहित. Option B himself with the daffodils, daffodil with the stars. निजको daffodil सहित daffodil को star सहित. Option then C happiness with the daffodils, star with the daffodils. Happiness with the daffodils, star with the daffodils. Option A himself with the cloud and daffodils with the stars. Himself with the clouds and daffodil with the stars. कोटा ठीक उत्तर पूर्णिमा. ओके बेटा तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. से निजकू मेघ सहित तुलना करिसंती एवं डैफोडिल को तारा सहित तुलना करिसंती. द पोएट हैज कंपेयर्ड हिमसेल्फ विथ द क्लाउड्स and he has compared the daffodil with the star. Okay, so option D is the right answer. Question number 40 40 number प्रश्न कौन? I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. ठीक अछि. This statement is an example of dash. एटा को प्रकार गोटे उदाहरण. I wandered lonely as a cloud. This statement is an example of dash. Okay, अच्छा. Option A metaphor, option B simile, option C personification, option D hyperbole. बहुत पिला कहिलेनी simile. Okay, simile टा होसी ठीक उत्तर पिले. Simile is the right answer. काहे कि कारण whenever there is as and like, whenever as और like लगे कि हमें कंपेयर करिबा कोनो जिंस को, that is called a simile. स्पेलिंग टा किसी पिला भूल लेखुच पिले SIMILE it is SIMILY लेखुच लिखि देले बही रे भूल हिजबो. जदि एग्जाम रे जदि हम लिखि देबा SIMILY भूल हिजबो. तेणु SIMILE ही लिखिबा पिले. ठीक अछि. सिमिली होची ठीक उत्तर. परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर प्रश्न. I gazed and gazed suggest that the poet dash. I gazed and gazed मु देखुतली जे देखुतली. एटा कोन सजेस्ट कोचे? सजेस्ट दैट द पोएट dash. पोएट कोन कोबळे आइ जंती. ऑप्शन ए took time to see the flowers. तांको फूल सब को देखिबा पई समय लागुची. ऑप्शन बी had no other work. कविंगर अन्य कोनोसी काम नाही. ऑप्शन सी वाज lonely. से एकाकी हेइ जाइचंती. ऑप्शन डी वाज enchanted. मंत्रमुग्ध होई जाइचंती. ओके समस्त कहिलेनी enchanted. He was enchanted. Yes बेटा yes he was enchanted. से मंत्रमुग्ध होई विमोहित होई जाइचंती. डैफोडिल्स रो दृश्य को अनुभव करी करी से मंत्रमुग्ध होई जाइचंती विमोहित होई जाइचंती. ठीक उत्तर होची he was enchanted. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर प्रश्न. Whom does the poet personify in the poem Daffodils? Whom does the poet personify in the poem Daffodils? काहाकू पुरुषर रूप प्रदान करिसेंती. पर्सोनिफिकेशन कहले जेतेबेले इनएनिमेट जिंस माने नॉन लिविंग जिंस मानकू माने जेतेबेले हमें लिविंग जिंस सहित कंपेयर करबा मनुष्य सहित कंपेयर करबा पर्सन सहित कंपेयर दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ऑप्शन गुडी को दउछु मु. ऑप्शन ए द क्लाउड, ऑप्शन बी द स्टार्स, ऑप्शन सी द डैफोडिल्स, ऑप्शन डी द लेक एंड ट्रीज. ओके 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 अच्छा वर्तमान मो तरफ गोटे प्रश्न अच्छी पिले. why do you think so the poet has personified? which line suggest
Which line suggests that the poet has personified daffodils? को line suggest करूची किए कहि परिबो? Which line suggests that the poet has personified daffodils? Daffodils को personified करिसंती को line suggest करूची? Who can tell me? Fluttering and dancing in the breeze. Very good beta swagatika. Very good. Fluttering and dancing in the breeze कारण मुंड टुंगारिबा एवं नाचिबा ए दुईटा मनुष्य मानकर काम. From this line it is very clear that the poet has personified. Very good. Question number 44. Sorry, 43. 43 number question. How does the poet personify the daffodils? How does the poet personify the daffodils? वर्तमान में जो प्रश्न पढ़ले. How does the poet personify the daffodils? Option A, by calling them a company. Option B, by saying they are fluttering and dancing. Option C, by referring to them as a host. Option D, by keeping them in his memory. तो ठीक उत्तर होची option B, by saying they are fluttering and dancing. Very good. So option B टा होची ठीक उत्तर पिले. तो जीवा पिले 44 नंबर प्रश्न पाकू. 44 नंबर प्रश्न है कौन? Which of the following is an exaggerated phrase or statement? Now whatever thing or sentence I'll tell. So from them, which one is an exaggerated phrase or statement? ठीक अछि. Option A host of golden daffodils. Option B, 10,000 saw I at a glance. Okay. Option C, the waves beside them dances. Option D, I wandered lonely as a cloud. এটা কোটা এক্সাগজেরেশন করা হয়েছে, অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, যেটা নুহ সে জিনিস কুহা যাইছে. ঠিক উত্তর হচ্ছে হরে কৃষ্ণ कहला बी, জ্যোৎস্না कहला बी. ओके, बीटा হচ্ছে 10,000 so at a glance. ओके, ऑप्शन बी आलोक मिश्रा. ऑप्शन बी बिजन बिहारी दास. ऑप्शन बी सागरिका, अलेख, मुकेश, मनोज शर्मा, Mr. Das Sharma. Love you too. Okay. Moshumi, Mani, Shangram, Tejashwini, Supriya. Love you Sharma, Mr. Sharma, Bansidhar, Munda. Okay. तो पिले ठीक उत्तर होबो 10,000 so I at a glance. Option B is the right answer. Question number 45. 45 number प्रश्न. Which of the following means moving to and fro? Moving to and fro. Moving to and fro. To and fro कहले आगु को पछुको हवा. To and fro. Option A, dancing. Option B, sprightly. Option C, fluttering. Option D, tossing. स्वागतिका कहला tossing. Tossing कहले मुंडो हलेवा. Very good. Okay, fluttering. Okay, tossing. किछि पिला कहउचंती fluttering. Fluttering नाइ रे पिले. Tossing is the right answer. Tossing their heads in sprightly dance. Tossing. ए मुंड गोटे मुंडरू आ गोटे मुंड को जदि हबो कौन हबो एमती हबो ना नहीं. दिस इज कॉल्ड यस. ओके, सो टचिंग. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. 40 नंबर प्रश्न. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट ऑफ वैकेंट? वैकेंट रो ऑपोजिट कोन? मु ऑप्शन देबी नहीं. आई विल नॉट गिव ऑप्शन देबी नहीं. वैकेंट रो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ वैकेंट? पेंस. वर्षा गला पेंसिव. वेरी गुड. पेंसिव. स्वागतिका गला पेंसिव. ओके, पेंसिव. पूर्णिमा गला पेंसिव. देन प्रीति पद्मा बेहरा. वेरी गुड बेटा. पेंसिव. अलेख पेंसिव. ओके, जय महाकाल. पेंसिव. हरे कृष्ण पेंसिव. सागरिका पेंसिव. तेजस्विनी, पंकजनी पेंसिव. विनोद, आलोक, विनोद. लीजा रानी बेहरा. वेरी गुड. जगन्नाथ पंडा. ओके, पेंसिव. रीमा महंत, प्रज्ञा प्रियदर्शिनी पेंसिव. मौसमी, संपत शेखर कुमार. ओके, सुप्रिया स्वाई पेंसिव. संग्राम साहू, शुभेन्दु जगन्नाथ. ठीक उत्तर होची बिले पेंसिव. ठीक, पेंसिव टा होची ठीक उत्तर. परवर्ती प्रश्न होची क्वेश्चन नंबर 47. 47 नंबर. व्हाट इज द इनवर्ड आई द पोएट मेंशन इन द पोएम डैफोडिल्स? इनवर्ड आई, कवि काहाकू इनवर्ड आई और को जिंस को इनवर्ड आई बोली कविता रे प्रेजेंट करिसंती काहाकू? मुकेश कुमार बेहरा, प्रज्ञा प्रियदर्शनी. वेरी गुड बेटा. तो परवर्ती प्रश्न हला कवि काहाकू इनवर्ड आई बोली कहिसंती? ऑप्शन ए माइंड्स आई. ऑप्शन बी इनर्स आई. ऑप्शन सी हार्ट्स आई. ऑप्शन डी क्लोज आईज. पूर्णिमा कहला माइंड्स आई. ओके, राज दे माइंड्स आई. कमलाकांत, संग्राम, अलेख. ठीक उत्तर होची यस. अविनाश, मौसमी, विनोद, जिज्ञासा, तेजस्विनी, इंदिरा प्रियदर्शिनी. वेरी गुड. विनोद, आलोक, संग्राम, देवेंद्र, विजन बिहारी, लक्ष्मी प्रिया, वर्षा रानी. माइंड्स आई होची एकदम ठीक उत्तर पिले. यस, इट इज द करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया. ठीक उत्तर होची माइंड्स आई. परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48. 48 नंबर प्रश्न. 48 नंबर प्रश्न कौन?
How many times is the word dance repeated in this poem? Daffodils poem रे dance शब्दटा केते थर पई रिपीट हेइची? कमलाकांत ऑलरेडी कहीदेला 4. ओके ऑप्शन दउची मु. ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5. 4 times. राज, अविनाश, अलेख, मधुस्मिता, आलोक साहू, स्वागतिका, मौसमी, अंशुमान, संदीप, अविनाश, राजदे, ओके संदीप सिंहदेव, इंदिरा प्रियदर्शिनी, चारी, जगन्नाथ पंडा, चारी. वेरी गुड. ताले पिले ठीक उत्तर होची 4 थर पाखापाखि 4 थर पई this word dance is repeated in the poem. 4 is the correct answer. सागरिका, जगन्नाथ, विनोद, मर्सी, मौसुमी. ओके राइट आंसर बेटा ठीक होची 4. क्वेश्चन नंबर 49 नंबर प्रश्न. What does the poet mean by a little thought? जय जगन्नाथ पद्मनाभ. What does the poet mean by a little thought when he says I gazed and gazed but little thought? ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି I gazed and gazed, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଦେଖୁଛି but little thought. ଏଠି little thought କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? लिटिल थॉट कहबार अर्थ कौन? ऑप्शन ए ही हैड थॉट ए लिटिल, से टिके टिके भाबुथिले. ऑप्शन बी ही हैड नॉट थॉट, से किछि भाबु नथिले. ऑप्शन सी ही हैड सम थॉट, तांके भीतर किछि थॉट थिला. ऑप्शन डी ही हैड ए स्मॉल थॉट, तांके छुट्टिया भावना थिला. ठीक उत्तर होउछे बेले हां नो थॉट. बहुत पिला कहि सारलानी, बहुत पिला पिले देखो लिटिल टा होउछी, लिटिल टा गोटे कोन? इट इज के कहि परबो? इट इज ए क्वांटिफायर्स. So it is a determinant also, it is a quantifier, it can be also used as adjective. It can be also used as adjective. So a little and little, ए दुईटार यूज हमें फर्स्ट ईयर पढ़ी थिबा समझते. a little कहले a little amount of, and little कहले बिल्कुल नथिला भलिया नेगेटिव वर्ड्स. So that's why when he has used here a little, that means little stand for no thought. Okay. परवर्ती प्रश्न 50 नंबर प्रश्न, शेष प्रश्न आज शेष प्रश्न. हाउ डिड द डैफोडिल सरपास द वेव्स? हाउ डिड द डैफोडिल सरपास द वेव्स? वेव्स मान को क्रॉस करी गला डैफोडिल्स कि बळी. हाउ डिड द डैफोडिल्स सरपास द वेव्स? ऑप्शन गुडी का सुनिबा. ऑप्शन ए इन देयर ब्यूटी एंड जॉयफुलनेस. थैंक यू मोहित. इन देयर ब्यूटी एंड जॉयफुलनेस. ऑप्शन बी विथ देयर साइंस एंड नंबर. Option C in their sprightly dance. Option A in their cheerfulness and brightness. In their cheerfulness and brightness by the rhythmic dance, please. Okay. Kirya Sindhu D. Option C. Option D. Kamala Kandi is telling option D. Mukesh B in their sprightly dance. Purnima option A. Lucky option C. Vision Bihari option C. ऑप्शन बी, ऑप्शन डी प्लीज. ओके डांसिंग. ओके ठीक उत्तर होची पिले. या लेट मी टेल द राइट आंसर. टाइम has already passed. So ठीक उत्तर होबो इट इज इन देयर cheerful and brightness. ऑप्शन ए इज सॉरी ऑप्शन डी द राइट आंसर. ऑप्शन डी टा होची ठीक उत्तर. हाउ डिड द डैफोडिल सरपास द वेव्स? इन देयर cheerfulness and brightness. तो एठी इन देयर sprightly dance जो माने कहउछो मिस्टर दास शर्मा. थैंक यू. ऑप्शन डी. तो आमे तुम जो माने इन दिस स्प्राइटली डांस कहउछो. डांस कैनॉट बी कंपेयर्ड हियर. नाचटा को कंपेयर करा जाई परिबनी. सो वी विल गो फॉर इन देयर cheerfulness and brightness. तांकर जो सुंदरता एवं cheerfulness थिला सेटा ऑप्शन डी टा को आमे नबा. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. आज एतिकी. आसंता काली पुणी गोटे नुआ चैप्टर एमसीक्यू पर आलोचना करबा. डिटेल्स रे बुझीबा बिले एमसीक्यू टा को पढ़िले मन रहिबनी. बुझीदबा गोटे थर बुझीदेले स्टोरी टा को बुझीदेले हमर गोटे थर रे पाठ क्लियर हिजिबो. सेति पई टिके टाइम लागु, बरं धीरे धीरे पढ़िबा, कम पढ़िबा, भल से पढ़िबा. तो आसंता काली को चैप्टर पढ़िबा तो मते एई वीडियो रो कमेंट रे कर दबो. पिले कमेंट दे देबो को वीडियो, से वीडियो ऊपर एमसीक्यू आलोचना करबा. ओके बाय बाय.